Next topic is analytical method of vector addition. This is very important topic. Under this, first of all, we will discuss about analytical treatment of the triangle of vector addition. Let us consider we have two vectors, A vector and B vector, which are represented by the side OP and PQ of the triangle. Here, both vector A and B vector are taken in the same order, and the third side of the triangle represents the resultant of these two vectors, which are taken in the opposite order, because here head of this vector R vector coincides with the head of the B vector. Let us suppose these two vectors A and B vectors are inclined at an angle theta with respect to each other. जब हम OP साइड को पीछे की तरफ ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं अप टू n तक सपोज, तो ये दोनों जो वेक्टर हैं A वेक्टर इधर की तरफ ही जा रहा है और ये B वेक्टर है, तो ये दोनों किसी एंगल के साथ इंक्लाइंड है. लेट अस सपोज दैट एंगल इज थीटा. सो लेट अस सपोज दिस रिजल्टेंट is inclined at an angle beta. Let us draw a perpendicular from point Q, that is perpendicular QN on OP when it is produced. हम यहाँ पे QN perpendicular ड्रॉ करेंगे QP साइड पे जब हम इस QP साइड को प्रोड्यूस करेंगे इस साइड की तरफ. ठीक है. सो हमारे पास क्या आया, QPN क्या है, थीटा. और इसमें और क्या हमें पता है, OP वेक्टर जो है A वेक्टर के बराबर है, PQ वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर एंड OQ वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर, विच रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स. फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल Q and P. So by using sin theta, by using this formula, sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse. Here perpendicular is NQ and hypotenuse is PQ. So here is PQ. Now the value of NQ is PQ sin theta. Clear? We know PQ vector is equal to B vector. On taking modulus on both sides of this term, we get PQ vector modulus is equal to B vector modulus, and we know modulus is cancel out with this arrow, so we get P. So here PQ is equal to B. So put here the value of PQ is equal to B. So NQ is equal to B sin theta. So NQ is equal to B sin theta. Take this equation number 1. So again by using this triangle, that is QNP, cos theta is equal to base upon hypotenuse. Here base is QN and hypotenuse again is PQ. So the value of this base PN is equal to PQ cos theta, and PQ is Q vector is equal to B vector, and the magnitude of this PQ vector is PQ is equal to B. So put here PQ is equal to B. So the value of this PN is equal to B cos theta. Take this equation number 2. By using Pythagoras theorem in triangle ONQ, so OQ whole square is equal to ON whole square plus NQ whole square. So the value of ON is OP plus PN. So ON can be written as OP plus PN. So here we can write ON is equal to OP plus PN. ठीक है. So by using Pythagoras theorem, OQ square is equal to ON whole square plus NQ square. So OQ square is equal to, the value of ON is OP plus PN whole square plus NQ
whole square. And we know OQ vector is equal to R vector, and the magnitude of OQ is equal to R. So put here, and the value of OP vector is equal to A vector, and the magnitude of this OP vector is equal to A vector. The magnitude of OP is equal to A. So put here, and the value of Pn from equation number 2 is B cos theta, and the value of NQ from equation number 1 is B sin theta. So we get R square is equal to OQ whole square, which is equal to A plus B cos theta whole square plus B sin theta square. By applying formula A plus B whole square, by applying this formula, A plus B whole square is equal to A square plus B square plus 2AB. So we get R square is equal to A square plus B square cos square theta plus 2AB. Here A, small a is replaced by capital A and small b is replaced by capital B. So 2AB cos theta plus B square sin square theta. So R square is equal to, we combine these two underlined terms as B square within bracket cos square theta plus sin square theta plus 2AB cos theta. So we get R square is equal to A square plus B square within bracket cos square theta plus sin square theta plus 2AB cos theta. And we know the value of cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So इसकी जो वैल्यू होती है, ये हम अपने 10th में भी पढ़ा होगा मैथ्स में, कि द वैल्यू ऑफ cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So we get R square is equal to A square plus B square. Here is 1 plus 2A cos theta. So the value of R is equal to under root of A square plus B square plus 2AB cos theta. Now the direction of the resultant. Let this resultant makes an angle beta in the direction of A vector. So the value of beta is, by using triangle ONQ, tan beta is equal to perpendicular over base. Here perpendicular is NQ and the base is ON, and again ON can be written as OP plus PN. So tan beta is equal to NQ upon OP plus PN, and the value of NQ is B sin theta, and the value of OP is A, and the value of PN is B cos theta. So we get tan beta is equal to B sin theta upon A plus B cos theta. Next topic is analytical treatment of parallelogram law of vector addition. Again we consider two vector A and vector B, vector A and vector B, which are represented by the two adjacent side of a parallelogram having a common point is O, and this resultant is represented by the diagonal of this parallelogram which is passing through this common point O. And we know in a parallelogram the opposite sides are equal and parallel. So if OP side is equal to A vector, if OP vector is equal to A vector, similarly QS vector is also equal to A vector, and if OQ vector is equal to B vector, so similarly PS vector is equal to P vector. Let us suppose these two vectors A and B are inclined, both these vectors are inclined at an angle theta with respect to each other. Clear? So when we draw perpendicular from S on OP, and this perpendicular meet the side OP when it is produced at point N, so here this angle is also theta because these two sides are
equal and parallel. So these two vector represents the corresponding angles. सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जब हमारे पास दो पैरेलल साइड्स होती हैं तो ये वाला एंगल इसके क्या हो जाता है? बराबर. सो दीज आर कॉल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट. First of all, we will calculate the magnitude of this resultant. So here S, P, N and Q, O, P is equal to theta, and the value of OP vector is equal to A vector, and the magnitude of OP is equal to A. Similarly, PS is equal to OQ, which is equal to B. So by using right angle triangle SNP, sin theta is equal to perpendicular is NS and hypotenuse is PS. So the value of NS is equal to PS sin theta. So NS is equal to the value of PS is the value of this PS is B. So NS is equal to B sin theta. Take this equation number 3. So again, by using this triangle, cos theta is equal to base upon hypotenuse. Here base is Pn and hypotenuse again is PS. So value of Pn is PS cos theta and the value of PS is again B. So Pn is equal to B cos theta. By using Pythagoras theorem in the triangle ONS, so OS square is equal to ON square plus NS square. So OS square is equal to the value of ON is OP plus PN. ठीक है. सो जब हम ON की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो OS होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP प्लस PN होल स्क्वायर प्लस NS होल स्क्वायर. So the value of OP is A and the value of this PN is B cos theta and the value of NS is B sin theta. Put here. So OS square is equal to A plus B cos theta whole square plus B sin theta square. By using identity A plus B whole square, which is equal to A square plus B square. Here B is B cos theta square plus 2AB. Here 2AB, B is B cos theta. So A square plus B square cos square theta plus 2AB cos theta plus B square sin square theta. On combining these two terms, we get OS square is equal to A square plus B square within bracket cos square theta plus sin square theta plus 2AB cos theta. We know the value of cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So OS whole square is equal to A square plus B square 2AB cos theta. So R is equal to under root of A square plus B square plus 2AB cos theta. Now we will find the direction of the resultant. Let us suppose this resultant is inclined at an angle beta with the side OP. So by using triangle ONS, tan beta is equal to perpendicular over base. Here perpendicular is NS and here base is ON. So here ON can be written as OP plus PN. So tan beta is equal to NS upon OP plus PN. Clear? So we know the value of NS is B sin theta and the value of this PN is B cos theta. So put here. So tan beta is equal to B sin theta upon A plus B. So tan beta is equal to B sin theta upon A plus B cos theta. Now special cases are, if the two vectors A and B are acting along the same direction, means if these two vectors A vector and B vector are acting in the same direction, मतलब दोनों same direction में act करें, A भी इस direction में है और B भी, दोनों same direction में हमारे पास अगर act करें, जैसे कि दोनों ऐसे ही जा रहे हैं हमारे पास, यहाँ से लेके दोनों same direction में है, A vector और B vector.
ठीक है। सो उस केस में हमारे पास थीटा क्या होगा 0। तो थीटा को हम रिजल्टेंट का जो हमने फॉर्मूला निकाला था इसमें अगर हम फिल करते हैं तो व्हाट वी गेट द रिजल्टेंट r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos 0। वी नो द वैल्यू ऑफ cos 0 इज़ 1। सो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab and r is equal to, so here we can use again the formula a plus b whole square. So here r is equal to under root of a plus b whole square. So this square is cancelled out with under root, so r is equal to a plus b. Again put the value theta is 0 in this expression also. So tan beta is equal to b sin 0 upon a plus b cos 0, which is again 0. So tan beta is equal to tan 0. सो tan 0 पे हमारे पास वैल्यू 0 आती है तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0. सो व्हेन थीटा इज 0 द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड इट एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a एंड v. इफ़ द वेक्टर्स a एंड b आर एक्टिंग अलोंग म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर a वेक्टर इस साइड पे एक्ट कर रहा है और बी वेक्टर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्ट करा है तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180. ठीक है, अगर ए इधर है और बी इधर है तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया 180, अगर ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है. ठीक है, तो इस केस में हमें पता है कि कोस 180 की वैल्यू क्या आनी है -1. सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab -1 मीन्स -2ab. सो द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या आ गया हमारे पास a square plus b square minus 2ab which is equal to a minus b whole square. So this whole square is cancelled out with this square root. So we get, or we can also write this expression as r is equal to under root of b minus a whole square. So we get r is equal to when this square is cancelled out with square root we get a minus b, or r is equal to when this square is cancelled out with square root we get r is equal to b minus a. So in this case resultant is equal to the positive difference between the magnitude of two vectors and it act along the direction of bigger vector. Which one is bigger? If a is bigger then the resultant is acting along the direction of a. If b is bigger then resultant is acting along the direction of b. So इस केस में अगर a b से बड़ा है तो रिजल्टेंट हमारे पास किस डायरेक्शन में लाई करेगा, एक वेक्टर की डायरेक्शन में. इफ़ b इज़ ग्रेटर देन a देन द रिजल्टेंट विल एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर. सो एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास दो कोई वेक्टर का सम इज इक्वल टू रिजल्टेंट आ रहा है तो मतलब हमारे पास क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू आ रही है रिजल्टेंट की जब ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करें हैं. ठीक है, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास कब आएगी रिजल्टेंट की, जब ये दोनों जो वेक्टर हैं ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज़ व्हेन द टू वेक्टर्स आर राइट एंगल टू ईच अदर. अगर ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर जो है, अगर ए वेक्टर ऐसे ही हमारे पास है और बी वेक्टर क्या है 90 डिग्री के एंगल से इंक्लाइंड है. ठीक है, सो पुट कोस थीटा इज इक्वल टू 90. सो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90 एंड वी नो कोस 90 इज 0. सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज द रिजल्टेंट व्हेन बोथ वेक्टर्स आर इंक्लाइंड at right angle to each other. Again when we put this value of theta 90 in tan beta expression we get tan beta is equal to b sin theta. Here theta is 90 upon a plus b cos 90. We know cos sin 90 is 1, so we get b in numerator, and we know cos 90 is 0, so we get only a denominator. So tan beta is equal to b upon a. So the value of beta can be find out by taking inverse on both sides. So beta is equal to tan inverse b upon a. और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस tan को अगर दूसरी साइड पे लेंगे तो हमारे पास a बच गया. ठीक है, क्या आ गया, बीटा इज इक्वल टू tan inverse b upon a.